फिलअप करूँगी जो एडीएस की जो क्या बोलते हैं आईलाइनर है, यानी कि आईब्रो फिलअप करते इससे भी, और इसका आईलाइनर का भी काम हो जाता है, तो 2 in 1 काम होता है। तो अभी मैं मेरा आईब्रो को फिलअप करूँगी। तो ये हमेशा मैं वीडियो में दिखाती हूँ। तो पहले मैं मेरा आईब्रो को एक शेप में लेके आऊँगी एक ब्रश की मदद से। और मैं हमेशा ही ब्राउन कलर ही पसंद करती हूँ, क्योंकि ब्लैक में ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तो ब्राउन कलर को ही थोड़ा सा लाइट करके मैं आईब्रो फिलअप करती हूँ। देन मैं अप्लाई करूँगी फेस कनाडा की कॉम्पैक्ट पाउडर। अभी मैं अप्लाई करूँगी आई शेडो। ये है, मैंने इसको नाइजीरिया से परचेज़ की थी, मुझे गिफ्ट में मिला है, और बहुत ही प्यारा सा आई शेडो है, और कलर भी बहुत प्यारा है पिगमेंटेशन से। तो इसमें से मैंने कलर चूज़ करूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिंक एंड ग्रीन साड़ी है और मेरा ब्लाउज़ की कलर ब्लू है, तो उसी हिसाब से मैं कलर चूज़ करूँगी। तो देखते हैं होते होता है क्या। पर्पल शेड मैंने पिक की हूँ। देन मैंने अभी ये वाला ग्रीन कलर पिक करूँगी।
पेन मैं इसी कलर की मतलब पिंक कलर पिक करूँगी। पिंक कलर फिलहाल नहीं है तो कोई नहीं। फिर मैंने सिर्फ लिड के ऊपर थोड़ा सा ए वाला ग्लिटर अप्लाई करूँगी। ये थोड़ा सा पिंकिस टाइप के है। मैं अप्लाई करूँगी आई लैसेस। फर्स्ट मैं जो अप्लाई करूँगी, हमेशा बोलती हूँ मस्कारा, देन मैं अप्लाई करूँगी आई लैसेस। ये जो नायका का मस्कारा है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिना सोच समझ के आप लोग परचेज कर सकते हो। मैं अप्लाई करूँगी ब्लश में थोड़ा सा पिंक रखूँगी, मतलब पिंक, क्योंकि ये है दिवाली के टाइम और रात में दिवाली सब मनाते हैं और रात के टाइम बहुत ज़्यादा साजो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब अच्छा ही लगता है। तो ये वाला कलर का मैं ब्लश अप्लाई करूँगी।